कभी रास रमे, रास रमे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। आग तन मन में लगे, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। राधा कैसे, राधा कैसे न जले। अभी मेरे पसंद के है, आपके पसंद के है। चुरा लिया है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी। कहीं बदल ना जाना सनम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी। कहीं बदल ना जाना सनम। आहा आहा आहा। थैंक यू सो मच, इट वॉज ब्यूटिफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति के दांव पेच हो या फिर खेल का मैदान हो, रॉकेट साइंस हो या देश की हिफाजत करने की जिम्मेदारी, महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फर्ज न सिर्फ बखूबी निभाया है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम बुलंदी से लहराया है। और नेटवर्क 18 अपने राइजिंग इंडिया शी शक्ति मंच से भारत की ऐसी ही महिलाओं के हौसले और जज्बे को सलाम करता है। शी शक्ति महिलाओं को सम्मानित करने का एक प्रयास है। मैं अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो नारी शक्ति पर अपने विचार हमसे साझा करें। भारत की नारी शक्ति पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में राइजिंग इंडिया शी शक्ति में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जोशी जी, हमारी सभी बहनों और बेटियों, गणमान्य अतिथियों, नेटवर्क 18 से जुड़े सभी मीडिया कर्मीगण, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने, सम्मानित करने और उसका उत्सव मनाने के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के अथक प्रयासों की प्रशंसा करती हूँ। मैं इस आयोजन में भाग लेने वाली वुमेन अचीवर्स की सराहना करती हूँ, जिन्होंने यहाँ अपने जीवन कथा लोगों के साथ साझा किया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित हुए हैं। इस समारोह को अपने टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस, वनवासियों की उपलब्धियों से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक
हर क्षेत्रों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा का मंच बनाया है। मुझे बताया गया है कि आज के सत्र में अनेक सफल महिलाओं ने अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं। यहाँ पर आशा दीदी और भारत की मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस से लेकर कविता सिंह, बधुरी ताती और पुनीता अरोड़ा जैसे हस्तियों को उपस्थित महत्वपूर्ण है। आप सभी ने एक सामान्य सी शुरुआत करके अपने लगन और परिश्रम के बल पर बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अनुभव से उन लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो विभिन्न चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, आज जब हमारे देश अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं तो इस कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत ही प्रासंगिक है। हमने भारत को निकट भविष्य में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या हमारी आधी आबादी के योगदान के बिना ये संभव है? ये प्रामाणिक तथ्य है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास यात्रा में वहाँ के सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों की भागीदारी रही है। कुछ राज्यों की वर्कफोर्स में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहाँ उनकी संख्या काफ़ी कम है। मैंने पहले भी कहा है कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिया है। अगर एक पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो गाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। शक्ति के बिना शिव अधूरे है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। हमारी सभी धर्म ग्रंथों और साहित्यों में नारी की महिमा सदियों से रेखांकित की जा रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करने में हमारी बहनें और बेटियों का योगदान होना अनिवार्य है। पिछली एक वर्ष के दौरान देश भर में अनेक बेटियों और बहनों ने मैंने उनसे मिली हूँ और अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि उनमें जीवन में आगे बढ़ने और देश तथा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की असीम ललक है। ज़रूरत है कि बस उनकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि अमृतकाल में नारी शक्ति के योगदान के बल पर भारत विकसित देश के समूहों में अपने अग्रणी स्थान बना सकेगा। देवियों और स्वजनों, महिला शक्ति के बिना एक स्वस्थ, सशक्त और विकसित समाज की परिकल्पना संभव ही नहीं है। हम धरती और भारत भूमि को माता के रूप में संबोधित करते हैं। विद्या, धन, बल के लिए हम माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारी इतिहास महिलाओं के योगदान की गाथाओं से भरा हुआ है। गर्गी, मैत्री, रोमसा और ओपाला जैसे विभूतियों ने, विदुषी नारी ने से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होकर रानी बेलू नाचियार और रानी चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं के योगदान के उल्लेख के बिना हमारे इतिहास अधूरा है। विश्व के अनेक विकसित देशों ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने में बहुत लंबा समय लगाया था, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स को शुरू से ही लागू कर दिया। दुनिया भर के लिए ये आश्चर्य की बात थी, लेकिन महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान देना तो भारतीयता का मूल भाव रहा है। भारत में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में पहले से ही आसीन रही है। नारी का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार रहा है। यब नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
ये हमारा सूत्र वाक्य रहा है। नारी के गौरव में आस्था रखने वाली हमारी परंपरा में अनेक साक्ष्य मिलते हैं कि जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तो पूरा समाज ने एकजुट होकर ऐसे कुकृत्य की भर्त्सना की है और अपराधियों को दंडित किया गया है। आज भी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है जो नारी समाज के हमारे सनातन मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध है। मुझे विश्वास है कि नारी के प्रति आदर भाव से युक्त हमारी व्यवस्था में निहित न्याय की शक्ति के बल पर नारी शक्ति सदैव आगे बढ़ती रहेगी। बेटियों और बहनों को सम्मान तथा उचित अवसर देना हमारी परंपरा है और हमारा दायित्व ही है। समाज को पढ़ो और बढ़ो की सोच के साथ बेटियों का साथ देना चाहिए। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली हमारी बेटियां अपनी इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम के बल पर ग्लास सीलिंग को तोड़ते हुए खेल, संगीत, कला, विज्ञान और रक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। ये समारोह भी इस तथ्य का एक स्पष्ट प्रमाण है कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट के युग में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे समाज का सकारात्मक सहयोग मिलने पर नारी शक्ति के नेतृत्व में ही हो रही है विकास की ये यात्रा और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। सरकार महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन एक समाज के रूप में हम सब का भी बेटियों और बहनों को सबल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। हम सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से भाग ले सके और अपना भरपूर योगदान दे सके। मीडिया हमारी समाज व्यवस्था का अहम हिस्सा है और लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। इस नाते मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया का काम समाचार प्रसारित करना ही नहीं है, लेकिन लोगों को शिक्षित करना और सकारात्मक दिशा में ले जाना भी है। मुझे खुशी है कि नेटवर्क 18 ने इस दिशा में एक खास पहल की है। अपने अपने क्षेत्र में सफल महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित ये समारोह प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि इस समारोह से प्रेरणा प्राप्त करके अन्य संस्थाएं भी आगे आएंगे और महिला सशक्तिकरण के हित में ऐसे आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राष्ट्रपति जी आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए। अब मैं हॉल में मौजूद तमाम अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो भारत के राष्ट्रगान के सम्मान में एक बार फिर खड़े हो जाएं। प्रिया सुरैया जी से विनती है कि वो मंच पर आकर राष्ट्रगान गाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
धन्यवाद। देवी और सज्जनों, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अब हमसे विदा लेंगी। मैं समस्त नेटवर्क 18 ग्रुप की ओर से उनका राइजिंग इंडिया शी शक्ति सम्मेलन में पधारने और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप भारत की फर्स्ट सिटीजन के सम्मान में कुछ देर खड़े रहें। बहुत शुक्रिया। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और आइए राइजिंग इंडिया शी शक्ति सम्मेलन का कारवां आगे बढ़ाते हैं। और मैं एक बार फिर आशा भोसले जी से गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर आए और हमें अपने सुरों और शब्दों से आशीर्वाद दें। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी सहयोगी और CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान को भी मंच पे निमंत्रित करती हूं। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। Ladies and gentlemen, please take your seat. Thank you. You've been a wonderful audience. Thank you very much. Please put your hands together for Asha Bhosle ji and Shireen Bhan. I'm going to request you one more time to please take your seats. Kindly take your seats for us to continue with the event. Ladies and gentlemen, may I please request everybody to please take their seats and clear the front alley, please. May I request everybody to please take your seats. Thank you. The sessions continue. Thank you very much. Please clear the front alley. Everybody please settle down. Thank you. I think the dignitaries on the stage and especially Asha Tai deserves our respect. Please, may I please request everybody to settle down. Sit down, please. It's our dharma. Please let us do this. Thank you very much. Ladies and gentlemen, good evening to everybody, and thank you so much for settling down. We're in the midst of a legend. आशा जी, मैं ये बता नहीं सकती कि कितनी गर्व की बात है हमारे लिए कि आज आप यहाँ पे हैं हमारे साथ इस मंच पे. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Asha Bhosle. We can do better. A standing ovation is what a legend like her truly deserves. So, आशा जी, जो प्यार झलक रहा है यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज मैं इतने सारे लोगों से मिली हूँ और जितने भी लोगों ने मुझे बताया कि वो यहाँ आ रहे थे, सबने सबसे पहली बात यही की कि हम आ रहे हैं आशा जी को देखने के लिए. तो आपने देखा कि किस प्रकार का प्यार आपके लिए है. पर मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपके जो सफ़र रहा है. आप 8 सितंबर को you're going to be 90, ladies and gentlemen. She's going to turn 90. What a fabulous journey it's been. और आपने हमेशा कहा है कि आप गाना नहीं चाहती थी,
आप काम करना नहीं चाहती थी, आप फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी आशा भोसले ने इतना कुछ कर दिया है, इतना करके भी आप अभी भी रिटायर नहीं हो रही हैं। आप चाहती मैं रिटायर? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते कि आप रिटायर हो। जब छोटी थी तब ये ठीक है, थोड़ा सा कैन वी गेट द साउंड अप ऑन आशा जी's माइक प्लीज? हाँ जी, बोलिए। मैं जब छोटी थी गाना तो गाती थी, सीखती भी थी पिताजी से, लेकिन इतना ध्यान नहीं था, ना स्कूल में ध्यान था, ना कुछ किसी चीज़ में। वो खेल 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 चाहिए और खाना चाहिए। मलाई बहुत खाती थी मैं। मलाई बहुत खाती थी, अभी खाती हैं कि नहीं? खाती हूँ। मलाई खाती हूँ, दूध बहुत पिया है मैंने, और सब लोग बोलते हैं आजकल दूध नहीं पीना चाहिए, तो मैं तो पी चुकी हूँ। और इसीलिए मैं शायद यहाँ आज हूँ। मुझे लगता है वो मलाई जो है वो काम आई है मेरे। फिर उसके बाद पता नहीं हालात ऐसे हो गए कि मैं गाने लग गई। गाना नहीं चाहती थी, फिर भी गाने लग गई। पता नहीं नसीब क्या चीज़ है, कुछ पता नहीं, अब हमको नहीं पता होता। फिर मैं गाने लग गई, फिर गाती गई, और आज तक गा रही हैं आप? जी हाँ, आज तक गा रही हूँ। बीच में बहुत बार सोचा कि अभी छोड़ दूँ, अभी बच्चे हो गए हैं तो छोड़ दूँ, फिर नहीं, तकदीर ही ऐसा झटका मारती थी कि गाना ही पड़ता था। तो इतना नजदीक कैसे लूँ मैं, मुंह में डालूँ क्या? जरा आवाज़ बड़ी करिएगा। कैन वी थोड़ा सा, अगर आप ऐसे पकड़ें तो शायद बेटर रहेगा, अगर थोड़ा सा। कैन वी जस्ट इंक्रीज द ऑडियो प्लीज फॉर आशा जी's माइक एज मच एज पॉसिबल? हाँ जी, ठीक है, हाँ अभी बिल्कुल। ठीक। बढ़िया। तो फिर से गाने लग गई, फिर से गाने लग गई, और गाती रही हूँ और गाती रहूँगी। गाती रही हैं और गाती रहेंगी। और आज जब हम बात कर रहे थे, आप अब दुबई जाएंगी, अपना जो 90th बर्थडे है वो आप सेलिब्रेट करेंगी एक शो के ज़रिए, और ये 3 घंटे का शो होगा, और आप गाने वाले ना ही सिर्फ अपने गाने, पर आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स है जो आपने नहीं दर्शाए हैं, आपने नहीं गाए, वो भी आप गाएंगी। सो ट्रिब्यूट टू द स्टार्स, ट्रिब्यूट टू द परफॉर्मर्स ऑफ all of these years that you've been performing. तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं अब तक परफॉर्म करूंगी और अपने 90th बर्थडे को इस तरह सेलिब्रेट करूंगी? हर नामवर आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरी बीवी मेरा क्या बोलते हैं, एक्सपायर जी, एक्सप्रेशन देती है जी, हाँ। और वैसे मेरा बेटा है जो मेरा बैकबोन है, वो मुझे खड़ा रखता है। नहीं तो मैं कभी का मतलब वो हो जाती थी, नर्वस हो जाती है, कभी कुछ होते, वो होने नहीं देता है। और ये जो शो है वो उसी का बनाया हुआ है कि उसकी माँ, उसको मैं इतनी प्रिय हूँ कि उसने बोला 90th बर्थडे कोई गाता नहीं है इस उम्र में, और तुम गा रही हो अभी तक, तो मैं ज़ोरदार शो करूँगा, लाइक ब्रॉडवे। Like Broadway. Yeah. And that is the tribute that her son, who's here with us. Ladies and gentlemen, a big round of applause to him as well. Thank you so much for giving all of us an opportunity to basically see her in action, in live action once again. आशा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा था, ये 1991 की बात है, और 1991 में आपसे जब पूछा गया था कि आप कैसे देखती हैं अपने सफ़र को, और आपने कहा था मैं जैसे बिल्डिंग की 7वीं मंजिल होती है उस पे बैठ के देखती हूँ कि एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर की तरह देखती हूँ कि मेरा किस प्रकार का सफ़र रहा है। आज 90 years ऑन, आप किस प्रकार से अपने जर्नी और अपने सफ़र को देखती हैं? असल में देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि आदमी कुड़ जाए कि कितना मैंने दुख सहा है, कितना मैंने कुछ किया है, ये वो नहीं करके मुझे ऐसा लगता है कि वाह, इतना कुछ पार करके मैं आई हूँ, आज इतना पार करके आई हूँ कि
किसी औरत के लिए नारी शक्ति है, शिव है, शक्ति नहीं है तो शिव भी नहीं है, वो शव हो जाता है। तो शक्ति जो है वो हर औरत में है, हर औरत उसको पहचानती नहीं है। अगर वो अपनी शक्ति जान जाए तो वो बहुत काम कर सकती है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इतने साल मैं सब मेरा कारोबार चला रही हूँ, मतलब बच्चे बड़े होने तक। कितना मुश्किल है कि एक औरत, अकेली औरत, 3 बच्चों को बड़ा करना, उनको स्कूल भेजना, उनके लिए खाना पकाना, उनके कपड़े देखना, उनको क्या संस्कार देने हैं, क्या नहीं करना है, ये सब देखते हुए फिर दिन रात काम करना है। रिकॉर्डिंग जाना है 10 बजे, रात के 2 बजे आना है। ऐसे मैंने लाइफ झेली है। फिर उसमें भी लोगों के, आपको जानती हैं, ताने वाने सुनना, उसको भी हंस के मज़ा लेके ताने सुनना करना, और जैसे इग्नोर करना दुनिया को, ऐसे इग्नोर किया मैंने और मैंने अपना काम करती गई। आपने जो कहा है कि दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे, दुनिया का काम है बोलना, लेकिन आपने इग्नोर किया और आपको जो करना था वो आपने किया। आपने शक्ति की बात की और कहा कि सब नारियों में ये शक्ति होती है, पहचानने की थोड़ी बहुत देरी लग जाती है। आपको कब पता चला? क्योंकि आपने कहा यू वर अ सिंगल मदर, आपने फाइनेंशियली अपना जो थे अपनी इंडिपेंडेंट थी काफ़ी बिगनिंग से, तो आपने ये जो शक्ति थी, आपको कब ये महसूस हुआ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ? काफ़ी लेट हुआ, मतलब 19-20 साल में ये मुझे लगा कि मैं, जब मुझे मतलब अलग हो गई, कर दिया, फिर उसके बाद मैं अकेली खड़ी थी सड़क पे और मैं सोच रही थी मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो एक अपना गला ही अपने साथ है, तो फिर आगे काम चलाती रही और बच्चों को लेके कैसे मैंने क्या ज़मीन, कैसे फ्लैट लिया, क्या किया, काफ़ी लंबा मामला है, तो ये मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मैंने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बड़ा किया, क्योंकि मैं काम करती थी ही उनके लिए। मुझे अगर कोई पूछे कि तुम किस लिए काम करती हो, तो मैं बोलती थी मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे बच्चों को बड़ा करना है, सिर्फ गाने से खाना नहीं मिलता है, तो मुझे पैसा चाहिए था, क्योंकि पैसा बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो पैसे के लिए मैंने काम किया, जो काम मिला वो करती गई। इस बेटे के बाप ने मुझसे कहा था कि दाने फेंकते जाओ, कभी ना कभी पेड़ आएगा ही आएगा, कोई ना कोई पेड़ आएगा, ये उन्होंने कहा था। और एक बात कही थी कि अगर खाना नमक के बगैर हो तो नमक के बगैर खा लेना, लेकिन पड़ोस में जाके नमक नहीं मांगना। तो ये 2 चीज़ें मैंने संभाली। इन 2 चीज़ों से मैंने किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाया, काम के लिए भी नहीं हाथ फैलाया, और काम करती गई। बस मैं बोलती थी कि पैसा मिले चाहे नहीं मिले, मैं गाऊंगी ज़रूर, कोई ना कोई पेड़ ज़रूर आएगा। तो ऐसा ही हुआ, कोई ना कोई अचंभे से गाना चल पड़ा और फिर आशा भोसले सबको पता हो गई। बिल्कुल। और आशा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हमने आपकी अभी फिल्म देखी और इतने सारे जो फिल्म स्टार्स हैं जिनकी आप आवाज़ बनी है, मधुबाला से लेके माधुरी दीक्षित तक, उर्मिला मातोंडकर से लेके जीनत अमान तक, और इतना बड़ा आपने जो सफ़र तय किया है, लेकिन आपकी एक जो डिस्टिंक्ट क्वालिटी रही है, और काफ़ी कंपैरिजन्स भी होते रहे होंगे आपके और लता जी के बीच में, लेकिन आपने एक कॉन्शियस डिसीजन किया था कि वो उनका स्टाइल है, आपका स्टाइल अपना होना चाहिए। तो ये आपने कैसे अपने जहन में ये तय किया था और उस स्टाइल को फिर कैसे होन करती गई? क्योंकि इतने सारे किरदारों के लिए आपने आवाज़ दी है, इतनी सारी महिलाओं के लिए आपने आवाज़ दी है, तो वो प्रोसेस कैसा होता है कि अब मैं जीनत अमान के लिए कैसे गाऊं, माधुरी दीक्षित के लिए कैसा गाऊं, मधुबाला के लिए कैसे गाऊं? बचपन से हम बहनों की आवाज़ एक थी, तो मैं अगर उसके जैसा ही गाती तो मुझे कोई नहीं बुलाता। वो अगर बोलते कि जी लता है तो आशा का क्या काम है, आशा तो इतना अच्छा नहीं गाएगी लता जितना गाती है, ऐसे तो
लोगों में होता ही है। तो हमारे में कहावत है कि नकटं व्हावं पण धाकटं होऊ नये। मतलब नकटा होना अच्छा है, लेकिन छोटा होना, बहन, छोटी बहन जो होती है ना, उसको हमेशा छोटा गिना जाता है। तो ये हमेशा से हुआ है। तो मैंने अपनी स्टाइल बदल दी, कहा कि दीदी जैसा नहीं गाना है, दीदी जैसा उसको नकल नहीं करनी। आज बहुत नकलें होती हैं उनकी, तब से लेके नकल हो रही हैं। तो नकल होती है, असल होता है। तो मैंने अपना असल बनाना चाहती थी। मैं आशा भोसले अपना नाम कायम करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने अलग अलग देशों के गाने सुने, अलग अलग इंग्लिश बोलते, इटालियन, स्पेनिश, कोई भी मैंने ये संगीत छोड़ा नहीं। और मैंने सुनती गई और अपने आवाज़ को चेंज करती गई, अपनी भावनाओं को, उनको देख के सोचती थी कि ये कैसे गा रही हैं, ये कैसे करना है। ऐसे करते करते फिल्मों में मैं वही करने लग गई और लोगों को कहा ये बहुत अच्छा स्टाइल है, ऐसा कोई गाता ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे स्टाइल का गाना कोई भी नहीं गा सकता था उस वक्त। तो मुझे अच्छा लगता था। लोगों ने काफ़ी ट्राई तो किया है, लेकिन ट्राई तो सब करते हैं और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई अच्छा कुछ करना चाहता है, अगर वो नकल भी करता है तो अच्छे के लिए करता है। मुझे इसमें कुछ नहीं है, मेरी जलने की आदत नहीं है। हाँ। कि ये ऐसा हुआ तो वो मुझे चाहिए, ऐसा वैसा, वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके नसीब में जो है उसको मिलेगा। मेरे नसीब में था, मुझे मिला कि नहीं, क्योंकि मेरे नसीब में था। मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, मैंने बहुत दुख काटे हैं, लेकिन मिला मुझे। ऐसे सुंदर बच्चे मिले, ऐसे सुंदर पोता पोती वगैरह मिले हैं, सब अच्छा है। मुझे जलन नहीं किसी से। मैं खुद ही बोल रही हूँ, मैं बड़ी दिल की औरत हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो मेरा प्रेशस चीज़ होगी ना, मुझे मालूम है कि इससे मेरा बहुत नाम होने वाला ये है, वो मैं उसको छोड़ के आ जाती हूँ। मैं इतनी बड़ी ईगो नहीं है। ईगो नहीं है, इसलिए मैं लोगों को बहुत पसंद हूँ। लोग मुझे गाने से ज़्यादा पर्सन से पसंद करते हैं। आशा भोसले मैं कैसी हूँ वैसे उनको पता है कि ये बहुत साफ बोलने वाली औरत है, ये सबसे मिलनसार है, सब है, वो उनको पसंद है। मैं इसलिए उनके घर की सदस्य बन गई हूँ। गाना सुनते हैं वो, गाने से मेरे को पहले जाना है, लेकिन बाद में घर का सदस्य बना लिया है। बिल्कुल घर का सदस्य है। और आई थिंक यू आर द सबकॉन्शियस ऑफ द नेशन। अगर हमें प्यार हुआ किसी से तो आपका गाना मन में आता है, दुखी हुए तो आपका गाना मन में आता है। जो भी एक इमोशनल जो जर्नी होती है हमारे जहन में, आपके गाने तो ज़रूर याद आ जाते हैं। लेकिन आशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज आपकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पे है, शी इज़ ऑल्सो attempting to get into the music business and आप उनसे क्या कहती हैं जब आपकी कॉन्वर्सेशन होती है? वो कहती हैं कि उन्हें भी आपके जैसे बनना है और आपकी जैसे सफ़र करना है, तो आप उन्हें क्या कहती हैं? वो मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है? क्योंकि वो कथक डांस 5 साल से सीखी है, उम्र की 5 साल से। वो कथक में एकदम ठीक है, मॉडर्न डांस में भी अच्छी है, एक्टिंग भी करती है, गाना भी गाती है, तो मुझसे ज़्यादा उसमें है। बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। I heard you. I'm walking up to her because this is your grandmother has said that you're as talented as her. So आज तुझा आवाज चांगला नाही, गाणं गाऊ नकोस. she's already giving you instructions on stage, is it? A tribute to your grandmother. नमस्कार। तो ये गाना एक्चुअली मेरे ग्रैंड आंट लता जी का है और ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इन दोनों से कोई कनेक्शन मिल जाता है फिर। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो
सके न हम, न वो समझ सके न हम। थैंक यू। Thank you so much for being such a sport. आशा जी, पास हो गई? अभी अभी उसको तराशना है। तराशना है। आप अभी भी रियाज करती हैं, रोज रियाज करती हैं? जी बिल्कुल। कितने घंटे करती हैं आप रियाज? मैं जब मन में आए, जब जैसे वक्त होता है ऐसे बैठ जाती हूँ। रात को 12 बजे भी बैठती हूँ और सुबह 7 बजे उठती हूँ, कभी 5 बजे उठती हूँ। मेरा ऐसा बंधन नहीं है कि मैं अभी सुबह ही करूँ या रात, कभी भी बैठती हूँ। हाँ। मेरे नौकर बहुत तंग आ गए मेरे से। जब देखो गाती रहती है, जब देखो ताने गाती मारती रहती है। पर ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक थोड़ी रेबेलियस भी रही हैं। आप बहुत रही हैं, बहुत रेबेलियस रही हैं कि आपकी मम्मी ने कहा था कि बाल नहीं काटने चाहिए, लेकिन आप जब बचपन में आप खुद ही गई और बाल कटवा के वापस आ गई। 13 साल की थी। 13 साल की थी। और नाना चौक में कोई उस वक्त, तो आज से कितने साल पहले, मतलब 44-45 की बात है, तब तो औरतों के लिए कोई दुकान होता ही नहीं था बाल काटने का, कुछ नहीं था ना। अभी जैसा है सैलून वालून। तो उस वक्त मैं बाजू में एक क्रिश्चियन आदमी का दुकान था, डेबेलो करके, उसके दुकान में सब आदमी लोग बैठे दाढ़ी वाड़ी कर रहे थे, तो मैं जाके अपने बाल कटवा के आ गई। माँ ने इतना मारा है मेरे को, बहुत मारा। मैंने कहा आ जाएंगे बाल, तू क्यों मारती है मेरे को। और उस टाइम सभी लोग वाइट साड़ीज पहनती थी, लेकिन आपने डिसाइड किया था कि आप कलर पहनेंगी। मुझे अच्छे लगते कलर, लाइट पिंक, बेबी ब्लू, जैसे स्काई होता है ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं पहनती थी। लेकिन हमारे घर में सब दीदी वगैरह सब सफ़ेद पहनते थे, बॉर्डर वाली साड़ी। तो आशा भोसले इज़ अ कलरफुल पर्सनैलिटी। जी। और आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि आपका जो आपके साथ जिन्होंने गाया है, 900 गाने गाए मोहम्मद रफ़ी साहब ने आपके साथ, और आपके फेवरेट सिंगर रहे हैं। एक अगर कोई गाना हो जो आपके सफ़र को कैप्चर करता है, वो बताइए। जो आपका कोई फेवरेट गाना हो, या जिससे आप अभी भी इंस्पायर होती हैं, जिसको आप सुन के मूव होती हैं। कोई भी गाना। वैसे मेरे किशोर से ज़्यादा आप किशोर जी का याद? इतने गाने एकदम से कोई याद नहीं आता है, तय करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र, गला जरा, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। Asha ji, thank you so much. Ladies and gentlemen, we have to do this. We have to do this for Asha Bhosle. She turns 90 on the 8th of September. Can we all sing a very happy birthday to her in advance? Ladies and gentlemen, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Asha ji. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Thank you, ji. Thank you so much, Asha ji. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the legendary Asha Bhosle. तो थैंक यू आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और आप आई यहाँ पर। प्रेसिडेंट साहब के हाथ से मुझे
अवार्ड मिला है, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत आपकी आभारी हूँ और आई लव यू। आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशा ताई हियर। शिशक्ति के मंच पर आशा ताई आप आई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। सुरीली शक्ति के लिए एक बार फिर से हम चाहेंगे सभी जोरदार तालियों से एक बार ये साबित कर दें कि आखिर किस तरह से शिशक्ति का ये मंच खूबसूरत पलों से सराबोर हुआ। Ladies and gentlemen, once again, a huge round of applause for Asha Bhosle. I'd request you all to kindly settle down as we begin our next session. Ladies and gentlemen, please be seated. देवियों और सज्जनों, अब वक्त है हमारे अगले सेशन अगम शक्ति का। इतिहास गवाह है, श्री शक्ति की दृढ़ शक्ति के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हुई। मैं कर सकती हूँ कि अपार साहस ने न सिर्फ उनके किरदार को पुरुष प्रधान समाज में सबसे अलग पहचान दिलाई, बल्कि बाधाओं की जंजीरों में जकड़ी हजारों लाखों महिलाओं को ये विश्वास भी दिलाया कि उनकी जिंदगी का विष भी अब अमृत बन सकता है। These trailblazers have ventured into domains traditionally considered male-dominated, showcasing exceptional resilience and determination. Before I invite them over, let me please invite my colleague Shivani Gupta to join us on stage, please. Ladies and gentlemen, please put your hands together for a panel of achievers who have risen to the challenge. Sanobar Pardiwala, a Bollywood stunt woman. Yogita Raghuvanshi, India's first female truck driver. Chandraprabha Ramkite, a fearless woman earth mover and miner from Nagpur. And the remarkable C.A. Bhavani Devi, India's fencing trailblazer. Thank you, Greya and Sabina. I do request all of our audiences to please start taking their seats one more time. I know there's been a bit of an upheaval, and I request our panelists also to take their seats. So it is an absolute pleasure for me to be speaking to these four women, because I've been lucky in my field. There have been a lot of women who've done what I do, and they've paved the way for women like me. But I have a unique set of panelists and speakers and guests who've done first as women in their fields or are achieving things in their fields that even men have not done. So right next to me is Sanobar Pardiwala. She's a stunt woman who's plying her trade in the Indian film industry. And obviously as stunts go or action goes, we associate it as much as we do with men and not so much with women. So she is one of those women who's leading the charge and paving the way for more women to do things that are often considered to be male-dominated. Next to her is Yogita Raghuvanshi, who's also India's first truck driver. Another act or a profession that is considered about men, isn't it? Right? Is truck driving for men? Yes or no? Not anymore, exactly. The answer is not anymore because of women like Yogita. On the very far corner is C.A. Bhavani, who's India's fencer. Fencing is a lesser known sport in India. So for a women athlete to come in a sport like that, which is also a fighting sport, right, with a sword, or fence, I should say, and that too,
She's reached a level that even male fencers in India have not. She's just coming of the World Championships, and before that you won India's first fencing medal at the Asian Championships. So a big round of applause for CA Bhavani as well, because she's winning medals where no Indian has won before. And also, last but not the least, Chandraprabha Ramteke. She's joining us. She is an earth's mover. She moves heavy, she works on heavy machinery, heavy vehicles, and she is one of the first and the very few women who do this. So, as I make that introduction, I do want our audiences to please encourage our speakers with a big round of applause. It is because of women like you that more and more women are visible, and visible in fields that were not associated with them. Sanobar, let me begin with you. Was it always a dream for you to do stunts? Is this something you grew up wanting, or is this just something that happened to you, and why? Well, it's very important how you grow in life and how you are raised. It is very important, and it plays an utmost major chunk in your life. It takes away and it gives you a lot. So when I was 12, I auditioned for my first shoot, and that was the moment, that was that epiphany when I realized that this is something that I'm very good at doing, and I want to continue doing it. Because I realized the whole purpose of education is in the end doing something and enhancing your talent in what you're good at. And I realized that at the age of 12 when I performed my first stunt. And since But how did you get into doing stunts? I was a black belt in karate. I was also a gymnast and a very good swimmer, and even better underwater swimmer. I could hold my breath for 2 minutes at that time. So a lot of these skills build up your reflexes. I am also an advanced deep sea diver and a skydiver. I hold a lot of records for the same too. And yes, so that is how it enhances your reflexes. And because your reflexes are enhanced in a particular manner, the way you react, and in the split second the way you react when you're supposed to whilst performing stunts is something that is built over a period of time. And I realized it. You realized it when you were 12? I realized it when I was 12. Wow, wonderful. Well, that is one thing that really helps, knowing exactly what you want. But before I go to our other guests, Sanobar, I do want to ask you, it is very difficult for women to be taken seriously, even in fields that are not so male dominated. But your field was not associated with women at all. There were no roles where women would perform stunts. So forget about having a woman, stunt master. So I want to understand from you, how difficult was it for you, or was it difficult for you to be taken seriously in the industry? Well, to be taken seriously, you had to outperform what a guy could not do. In fact, you had to perform better than them, and at the same time, it's not easy. It is difficult because, let's say, even if you, at the end of the day, I'll give you one small vague example. I was called for a bike riding shoot, and it was a very simple shot. I didn't have to do any tricks, nothing, just ride the bike, point A, point B. And just before the take, the director asks me in front of everyone in the loud mic saying, "Can you ride a bike? Are you sure you can ride the bike? Wait, stop." And I'm like, "Didn't you see me ride a bike to the shoot? Isn't that what I'm hired for?" Yeah. So even though you were hired for that job, the director was uncertain you could do that job. Just before the take, he was absolutely uncertain that I could do it or not. And that is where you have to take criticism, and you have to take things with a pinch of salt and a pound of positivity. Absolutely. Well, other than that, you wouldn't be able to do it. But Yogita, I want to come to you. You're India's first truck driver. If I have it correct, आपने एक पर्सनल ट्रेजेडी के बाद ट्रक ड्राइविंग शुरू करी. आपने लॉ पढ़ी थी, लेकिन आप लॉयर का काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि आपको लगता था कि उसमें आपको सेटल होने में और पैसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा. लेकिन ट्रक इजी मनी था या क्विक मनी था. एम आई राइट? या बट ट्रक ड्राइविंग एक ऐसा काम है जो महिलाएं करती ही नहीं थी. नो वुमन वाज डूइंग दिस बिफोर यू. सो व्हाई वुड यू इवन थिंक ऑफ डूइंग दिस? एंड वाज देयर नॉट अ डाउट दैट आई कैन डू दिस? मेरी सोच ये थी कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती. ये जो सोच थी कि महिलाएं ये काम नहीं करती है, ये उन लोगों की सोच है. मेरी सोच तो नहीं थी ना.
तो मेरी सोच नहीं थी तो मैं कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। बट आपको लोगों ने कुछ डराया, कुछ ये भी कहा होगा कि आप मत करिए, बड़ा रिस्की काम है, ट्रक ड्राइविंग आप करोगे तो पूरे देश में आपको जाना होगा, अकेले जाना होगा, बाकी ट्रक ड्राइवर्स के साथ रुकना होगा, क्योंकि आपके फील्ड में तो मर्द ही मर्द है, तो वो कैसे टैकल किया आपने? बाकी लोग तो बाद में कहेंगे, सबसे पहले तो घर से शुरुआत होती है। तो घर में ही सबसे पहले पापा ने मना किया, भाई ने मना किया, मैंने नहीं सुना उनका कुछ, मतलब जो भी उन्होंने कहा, और मैंने तो वही किया जो मुझे करना था, और उसी में आगे बढ़ी और आज भी कर रही हूँ। लेकिन करते करते क्या चैलेंजेस आपने देखे, जो सिर्फ वो चैलेंजेस थे जो आपकी कैपेबिलिटी से रिलेटेड नहीं थे, सिर्फ उस चीज से रिलेटेड थे कि आप एक महिला हैं? हाँ, एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज ये था कि पब्लिक, मतलब आम जो लोगों के बीच मेरी गाड़ी जाती है और आती या रुकती, या फिर मैं जैसे टायर वाले के यहाँ पे रुकी है गाड़ी और मैं कह रही हूँ कि भैया टायर बनाएंगे, तो वो स्कूटर लेके गाड़ी के मतलब दुकान के पास आ जाता है, बोलता बनाता है, फिर मैं कहती हूँ भैया मेरा गाड़ी का टायर बनाएंगे, तो बोले ये स्कूटर आपकी नहीं है, मैंने कहा नहीं मेरी वो ट्रक है उसका टायर बनाएंगे। तो आपकी गाड़ी नहीं पहचान पाते थे वो? हाँ, मतलब कभी सोचा ही नहीं उन लोगों ने कि ट्रक आपका हो सकता है। और ऐसे ही हाथ से सभी दूर ज़्यादातर हुए। मतलब बाकी ट्रक ड्राइवर्स ने आपको देख के कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने आपको इनकरेज किया, आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करी, लेकिन या बाकी मर्द को लगता था कि ये औरत कहाँ से आ गई हमारे बीच में? ढाबे के ऊपर जब आधी रात में ड्राइवर्स लोग चाय पीते थे, मैं भी पीने के लिए ब्रेक मारी और गई, तो सारे इस नज़र से देख रहे थे कि कहाँ से आ गई है और क्या है, और ये चाय पी रही है। मतलब मेन तो महिला रात में, आधी रात में ड्राइवर्स लोगों के बीच में जाके चाय तो पिएगी नहीं डिमांड करके। तो आप जाती थी उनके बीच में? हाँ, क्योंकि मुझे रात भर, जैसे मेरे पास टमाटर लोड है तो मुझे रात भर ड्राइव करना है। हाँ। तो मुझे चाय की जरूरत तो पड़ती थी नींद को भगाने के लिए। आपको कभी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ दिक्कत हुई, कुछ मुश्किलें आई? एज ए वुमेन, मतलब महिला होने के नाते मुझे सेफ्टी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि किसी भी ड्राइवर या फिर मतलब जेंट्स लोगों के बीच जब मैं गई तो मुझे उनसे असुरक्षा महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस उनके नज़रिए से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। जी। तो मतलब मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ये लोग कुछ भी सोचे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं बाकायदा 2 बिस्किट लेती हूँ, चाय पीती हूँ, और जब सारे लोग मेरे पे नज़र रखते हैं कि ये कहाँ जाती है देखते हैं, और जब ट्रक में बैठ के ट्रक चलाती हूँ तो मुझे सैल्यूट मारते हैं। अच्छा। You know, this is a very important lesson as women. I think all of us understand this, कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव करें, कॉन्फिडेंस के साथ चलें, तो लोगों को वो दिखता है, और आपके सामने अगर कोई गलत नज़रिए का मर्द है भी तो वो भी आपसे ज़रा 2 कदम दूर ही रहेगा, अगर आप वो कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट करते हैं तो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो योगिता ने बोली, एज विमेन, एज यंग गर्ल्स, स्पेशली इन सिटीज़ और इवन इन स्मॉलर सिटीज़ और टाउन्स, हम लोग घर से 10-11 बजे के बाद निकलते भी नहीं हैं, और यहाँ पे योगिता अकेले ट्रक ड्राइविंग कर रही है अराउंड द वर्ल्ड ऑन हाईवेज विच आर barely lit and stopping at dhabas and all. So I think she deserves a big round of applause for just having that heart to do so. To just think कि मैं कर सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? जी योगिता जी? हाँ बिल्कुल। कभी डाउट नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ, बिल्कुल 1% या -0.1% भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल जी। क्योंकि मैं कर सकती हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसे मैं हैंडल करूँगी। और मैंने महसूस किया कि एक प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हुए जब आगे बढ़ रहे, तो पता नहीं कैसे अपने आप ही ऊपर वाला सारे रास्ते खोलते हुए चलता है। जी बिल्कुल, उस पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल। चंद्रप्रभा जी भी एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने वो काम किया है जो महिलाएं नहीं करती थी। आप एक अर्थ मूवर हैं, आप बड़ी बड़ी मशीनरी और व्हीकल्स चलाती हैं, तो हम मुझे अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये काम आपने क्यों शुरू किया? आपके हस्बैंड करते थे उसी कंपनी में? नहीं, उसी कंपनी में काम करते थे, लेकिन कंपनी में काम करते थे, लेकिन जो हैवी व्हीकल्स हैं वो आपने चलाना शुरू किया। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम थोड़ा सा माइक ऊपर करिए। पियून भी सब बनते हैं, पियून चपरासी भी बनते हैं, यानी सब काम करने वाले बनते हैं, लेकिन ऐसा हेवी मशीन चलाने वाले कोई नहीं बनते। तो हमने सोचा कि हम नया कुछ करके दिखाएंगे,
और फिर मेरे को बहुत लोगों ने डरा है कि खदान है, वहाँ मर जाते हैं, घुटने टूटते हैं, कमर टूटती है, और वो जेंट्स का काम है, लेडीज का काम नहीं है। फिर भी मैंने बोली कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी और कर सकती हूँ जी। और आगे बढ़ गई मैं। मेरे को सपोर्ट सब लोगों ने किया है, मेरे ऑफिसर लोगों ने, सबने सपोर्ट किया जी। और कोई कोई डराते थे कि नहीं करना करके, लेकिन घर का भी सपोर्ट अच्छा था कि आप कर सकती हो जी। मैं करके दिखाई। चलिए चंद्रप्रभा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, ये ऐसे फील्ड्स हैं, आप नोटिस करेंगे हमारे जो पैनलिस्ट हैं बहुत ही फिजिकल फील्ड्स में हैं, तो उनका जो फील्ड है वो ऐसे फील्ड्स हैं जो महिलाओं और मर्दों के बीच में जो एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है वो स्ट्रेंथ का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है। आई थिंक वी कैन एक्सेप्ट दैट men are bigger, often stronger than us. That's just how it is. That's how our biology, physiology is. लेकिन आपके वो फील्ड्स हैं जिसमें स्ट्रेंथ लगती है और डेंजरस फील्ड्स हैं। तो चंद्रप्रभा जी, आपको कभी लगा कि आपकी बॉडी में वो उतनी ताकत नहीं है जो जरूरी है आपके फील्ड के लिए? हाँ, लगा ना मैडम। लगा। हाँ। तो कैसे आपने ओवरकम किया? जब स्टार्टिंग में जब मशीन पे चले गई ना मैं, तो वो मशीन देख के मुझे भी डर लग गया। तो ऐसा धीरे धीरे पैर वगैरह डालना था मेरे को, और वो मशीन के ऊपर चढ़ना था, फिर बटन दबाना था, क्या करना था ये मेरे को नहीं समझ में आता था। लेकिन कोई कोई जेंट्स ऐसे रहते हैं कि चलो मैडम आपको इच्छा है तो चलो आपको शिकायत देते हैं जी। तो मैं पहले तो वो क्या बोलते पीसी सीख गई मैं, फिर बाद में शावेल बोले तो पूरे खदान की एकमात्र ऐसी बड़ी मशीन है कि चार बकेट उसमें डाले तो एक डंपर फुल हो जाता है। तो फिर मेरे को सब लोग डराते थे कि ये शक्तिशाली मैडम का काम है, आपका काम नहीं है, आप मत करो ये काम, आप छोटा मोटा काम कर लो, कुछ भी मांग लो। नहीं, मेरे को वही करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। ऐसा बिल्कुल। सो बेसिकली इवन इफ देयर आर इश्यूज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यू कैन ओवरकम इट। अगर आपके पास बिलीफ है और कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, यू कैन ओवरकम। बिल्कुल कर सकते मैम, बिल्कुल कर सकते सारा। तो आप मुझे बताइए, आपके फैमिली में बच्चे हैं आपके? हाँ, लड़की एक लड़का है? एक लड़की। अच्छा, तो आप अपनी लड़की के लिए क्या चाह रही हैं? अब क्या करे वो? लड़की के लिए जी, लड़की के लिए वो भी मेरे जैसी स्ट्रांग बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। All right. Let me go across to Bhavani Devi as well, who's the sports star and athlete on the panel. Bhavani, you are playing a sport which is not very well known in India. On top of that, it is a sport which is physical. It's not, I mean, you obviously do touch your opponent, but not quite in contact sport. But was there ever a time that you were discouraged from playing this sport? Ki, why don't you as a woman maybe play something else that would be better for you? Hi. First of all, thank you for having me. I'm really honored to be here. So yes, in the beginning of my career, I always faced these questions, but from outside, not from my family. So always people or my friends, mothers or father, they always tell me like, Bhavani, I think fencing is not for India. Why you waste your time and energy? Better focus on your education, get a job, do something else. You can't build a career in fencing. But for me, I understand from their concern, you know, but they don't know what sports life is. Not all people who do sports achieve in the sports, whether it is popular sports or not popular sport. But for me, fencing, the first ever competition in fencing was the school games. I lost my match, but all my schoolmates, my teammates got medal. So from that day, I thought like I want to do something in this sport, not in the district level, but I want to win something for India. So that's what kept me motivated. But for me, the most important thing which I had with me was I want to do my 100% effort, whether I have money or not, whether I have support or not. From my side, after I leave the sport, I don't want to feel regret. Oh, I should have tried. Maybe I could have tried. Maybe I could have taken loan, or I could have go for this competition. But I know that I will work hard. I know I'm ready to work hard. I know I can do something, but I don't know what. But I want to try for it for 100%. And for that, my family has stood by me all the tough times. I think it's because of their support and strength which
kept me going forward whenever I face so much of problem. Yes. Your Yes. mother is Yes. actually here. So I'm guessing your mother has played a big part in your Yes, life, as yes. always, as is the case for all of us. Yes, I think she's the Shakti which I have in my life, which kept me going to this level in this sport, and to whatever level I go in this sport in my life, it's only because of her. Because we had so much financial problem in the initial stage. We had to take loans for like 20 lakhs or 25 lakhs. I can say one thing as an example. You know, I was going for a competition, and she was trying to get funds, and it was delayed. So I took the flight because we pay for the flight tickets later. So I took the flight, I arrived to the airport, but I don't have money to go to the hotel. So I stayed that night in the airport, and then the next morning she sent me the money, and then I went to the hotel. So in the beginning it was so hard, but for me, I want to do, you know, I want to try, I want to feel happiness by trying. So whether I get the result or not, it's the secondary thing. So that's what my mom always says. You know, when even I thought like, Mom, maybe I think I should stop. It's too much for our family. You know, I can see what they are struggling. So she said, no, you started it. And go till the end. You know? Absolutely. Amazing. A big round of applause for mothers like that who encourage their daughters. Bhavani, very quickly, I want to understand from you. I interact with a lot of athletes and female athletes as well. What is that one issue that female athletes face when they play sports? Is there still an issue which is what men may not face but women face? Is there something? I think the most common thing which I feel still happening is because in sports sometimes you get the result early or later. But if women doesn't get results in the earlier stage, it's difficult for the parents or the society to let them continue. They think, oh, it's finished, you cannot do. But for men, it's not the same. They will try. It's okay. It's not. It's it's okay for men. For women, it's a little bit very hard. important point you made, that if a woman is not successful early in her career, then the pressure builds to get married and maybe build a family. For men, that pressure is not there. So, very important point there. I have final minutes left. Sanapar, I want to come back to you. Do you want to share a stunt that was one of the toughest ones you have done and you did better than any man around? Well, this was for the movie Ravan that I had performed, and this was a sequence where we jumped off a cliff which was around 300 feet high. The ideal shot was to jump from the cliff next to the waterfall. She doesn't die, so the person doesn't die, Aishwarya doesn't die in that shot, and she falls through the trees, rivers, rocks, branches, trees, rivers, rocks, branches, and then finally into the river. She survives that fall, 300 feet. And we did that in Ethirapalli rainforest in Kerala, and it was one of the most mesmerizing stunts ever. We won, I got nominated for the Taurus World Stunt Awards in 2006 for the same. Okay, excellent, well done. I do thank all of the lovely ladies for being here. योगिता जी, चंद्रप्रभा जी, भवानी, सनोबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपकी स्टोरी से हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत सी महिलाओं को बहुत उम्मीद मिलेगी और वो भी अपने किसी नए फील्ड में कुछ नई शुरुआत करेंगी. थैंक यू सो मच. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the very, very inspiring tales that these ladies have shared before you. And Shivani and I now request you to felicitate all the ladies. Can we have the mementos, please? अगम शक्ति में श्री शक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है जोरदार तालियों के साथ. आप सभी ने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Ladies and gentlemen, our Agam Shaktis, a huge round of applause for them, please. Thank you so much.
Ladies and gentlemen, this one is special and really, really special. Our next session is called Vanvasi Shakti. Now, there are the true manifestations of She Shakti in the hinterland. They have traveled many miles to come here and honor us with their presence. They and their work are not often talked about, and it gives us immense pride that She Shakti becomes the platform where their work takes the spotlight. I first would request my colleague Palki Sharma to please come up on stage to moderate this session, and before we introduce our panelists, Palki, please. वनवासी शक्ति, जिसका जिक्र किए बगैर शी शक्ति का सफर पूरा नहीं हो सकता। भारत में लाखों आदिवासी महिलाओं की जिंदगी को सशक्त बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए कई ऐसी शी शक्तियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले हम मंच पर बुलाना चाहेंगे, स्वागत करेंगे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में जाना पहचाना और परिचित नाम बुधरी ताती जी को। जोरदार तालियों के साथ ताती जी का सभी स्वागत करें। आपने समाज सेवा में 40 दशकों से ज्यादा का वक्त दिया है, जिसके लिए हर कोई इस वक्त धन्यवाद कह रहा है। इसके अलावा शी शक्ति की अदम्य मिसाल पद्म पुरस्कार विजेता भूरी बाई जी का भी आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। शी शक्ति की एक और मिसाल वनवासी शक्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही सुरेंद्र देवी राणा जी का भी हम मंच पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपने महिला कल्याण स्वयं सहायता समूह से आप जुड़ी हैं, अपना विशेष योगदान दे रही हैं। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भी आप तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही स्वागत करें सुरों से वनवासी संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित रखने में सबसे आगे रहने वाली आंध्र प्रदेश की अचम्मा जी का भी। जोरदार तालियां अचम्मा जी आपके लिए। आप लोकगीतों के जरिए संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में स्थानीय लोगों को लगातार शिक्षित करती रही हैं। शुक्रिया। ये एक बहुत ही स्पेशल सेशन है, थोड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जिन विषयों में इन्होंने काम किया है उनकी अक्सर चर्चा नहीं होती। बुधरी ताती जी, आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं। आपने 500 से ज़्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। क्या प्रेरणा रही आपकी? क्यों आपने सोचा कि यही आपको करना है? नमस्कार। मैं क्योंकि जो वहाँ का परिस्थिति पहले से जो देख रही थी कि मैं 1984 में 15 साल की थी, तभी समाज के काम करने के लिए मुझे अपने मन में जो प्रेरणा आया कि ऐसी जो छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला में हजारों बहनें हैं, कभी विद्यालय नहीं गए, न कुछ भी नहीं किए। ऐसे बहनों के बीच में मुझे क्या करना होगा, ऐसा सोच के मैं इस काम को शुरू की। और मैं सबसे पहले तो नागपुर में गई, महिलाओं का जो काम देखी 1.5 महीना में, उससे मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिला। और जब जो है मैं वहाँ जा कर के मैं काम करने का प्रयास की। और सबसे पहले आप सब जानते होंगे अबुनमर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कभी हम सभी लोगों से कभी उनका उठना बैठना मिलना नहीं होता है। ऐसा जो परिवार है, जो 12 गाँव को हमने चयनित किए और उस गाँव के बीच में हमने गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद हम सबको देख करके सब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके भागना चालू किए। तो भागना चालू किए, हम उनके पीछे हम लोग भी भागने लगे। जब तक उनके पीछे हम नहीं जाएंगे तो उनके सामने लाएंगे कौन लाएगा, ऐसा सोच के हम लोग उनके पीछे गए। वहाँ देखे तो पूरे ऐसा समाज है, कुछ समाज ऐसा है कि वो कभी आगे का जो उनका जो विकास का बातें कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उनको चिन्हित किए, वहाँ गए, उनको जो है हमें ऐसा प्रेरित किए और उनको एक तो पूरे 500
गांव को पहले संपर्क किए। संपर्क करने के बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि इस जगह में काम करना है तो कैसा करना होगा। तो हम जैसे बड़े बहनों को संपर्क किए, हमारे पास लाने के बाद जो है उनको हमने सबसे पहले शिक्षित बनाने का कोशिश की है। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति स्वयं को शिक्षित होना पड़ता है, उसके बाद जो है काम करना होगा। ऐसा बहने को सबको लाने के बाद जो है हम लोग उनको शिक्षित किए। कभी विद्यालय नहीं गए ऐसी बहनों को हमने उनको साक्षरता बनाए। 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं जितना पढ़ाना ऐसा पढ़ा करके उन्हीं बहनों के माध्यम से हमने 400-500 महिलाओं को काम करने का प्रयास किए। बहुत ही सराहनीय है और मुझे यकीन है आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं और समाज का जो रुख है वो भी अपनाता नहीं है इतनी जल्दी ऐसे चेंज को। हम आपके पास आएंगे, अभी फ़िलहाल भूरी बाई जी के पास जाते हैं। आप भील आर्टिस्ट हैं और आपने पिथौरा म्यूरल पेंटिंग में काम किया है। ट्रेडिशनली महिलाओं को इस क्षेत्र में अपनाया नहीं जाता, तो आपने क्यों चुना ये, और आपको शुरू में किस तरह की रेजिस्टेंस, किस तरह की सामाजिक प्रेशर से आपको आगे बढ़ना पड़ा? देखिए, ये हमारा भील आदिवासी पिथौरा है जी, वो पिथौरा की पहचान है जी। लेकिन जो हमारे जो जनजाति में जो महिलाएं हैं वो पिथौरा नहीं बनाती है, लेकिन ये हमारी पहचान है। मैं पिथौरा को नहीं बनाऊंगी, लेकिन उसमें जो पूजा में पिथौरा बाबा का जो घोड़ा है और उसमें जो पूजा में लेते हैं वो चीज़ मैं नहीं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी जो मुझे बचपन से ही शौक़ था। जब मैं 7-8 साल की थी तो मुझे बहुत शौक़ था। मेरे को ऐसा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन मेरी माँ कहती थी त्यौहार आ रहे हैं तो वो गोबर मिट्टी से अपने घर की दीवारों को लिपा पोती करते हैं। शादी होती है तो जैसे शादी वाला घर लगना चाहिए, जब पूजा होती है तो पूजा वाला घर लगना चाहिए। तो मैं अपने हाथ से ही कलर लेके और बैठ जाती थी। मैं खुद ही हाथ से कलर बना लिया करती थी। जैसे वो केकड़ा मिट्टी निकालता है, वो मिट्टी ले आती थी। काला कलर जो मिट्टी का तवा पे हम रोटी बनाते हैं उसको खुरूस के काला कलर बना लिया करती थी। जब मेरे को ऐसा लगता कि मैं अब ग्रीन कलर कैसे बनाऊं, तो जैसे वो सेम कलर की जो पत्ती है उनको इकट्ठी कर ली बहुत सारी, उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद उसको पत्थर पे पीस लेती थी। पीसने के बाद फिर उसको एक बार गला दिया। मैं ग्रीन कलर बना लिया करती थी, मुझे शौक़ था बचपन से ही। ऐसे धीरे धीरे जब त्यौहार आया, शादी आई, ऐसे कर लेती थी। फिर जैसे धीरे धीरे हम भाई छोटे थे, दोनों बहनें थी, कमाने वाले थे नहीं। माँ बाप बहुत गरीब थे, क्योंकि हमको खाने के लिए धान मिलता नहीं था। वो किसी के यहाँ एक लोटा लेके जाते थे तो उधार लेके आते थे। वो दूसरी बार फिर नहीं मिलता तो दूसरी बार जाते थे तो बोलते हैं नहीं, पहले की तुमने उधारी नहीं चुकाई, हम नहीं देते हैं। तो मैं अपने बचपन में बहुत ही गरीब रहे और लोगों के खेतों में कमाने के लिए, काम करने के लिए जाती थी, जो कटाई करने के लिए, निदाई करने के लिए, तो 1 रुपये मिलते थे। दोनों बहनें 2 रुपये कमा के लाती। ऐसा करते करते फिर हमारी दोनों बहनों की शादी हो गई। मेरा पति कहने लगे, बोले गांव में तो 1 रुपये मिलते हैं, 1.5 रुपये मिलते हैं, उसमें कहाँ पूरा होता है, अपन शहर से लें, शहर में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मेरा पति मेरे को भोपाल में लेके आया। जब भोपाल में आए हम तो एक म्यूज़ियम है भारत भवन करके, वो म्यूज़ियम बन रहा था। तो मैं आते से म्यूज़ियम में वहाँ पर मैं मजदूरी करने लगी। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, क्या थे। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे और भारत भवन के डायरेक्टर भी थे, जे स्वामीनाथन जी जगदीश करके। उनका आज भी मेरे सर पे उनका आशीर्वाद है। तो उन्होंने बोला, बोले आप कहाँ के हो, क्या समाज हो, कैसे आपके गांव में शादी होती है, कैसे मतलब पूजा पाठ करते हैं, किस देवी देवता को मानते हैं। तो मैंने कहा हम हिंदी समझते नहीं हैं, आपको हम कैसे समझाएं। तो पहली बार हम निकल के आए, हिंदी नहीं बोलते थे, हिंदी बोलना ही नहीं आता था। तो सामने वाला बोल रहे हैं तो हम कहते हैं अरे ये बड़े आदमी हैं, ये इसको क्यों बात कर रहे हो,
हम लड़की डरती थी, जी। बात करने के लिए डरती थी, उससे बात मत करो ये पकड़ के ले जाएंगे। गांव के रहने वाले और पहली बार ऐसे बात करने में बहुत डर लगता था। वो रोज आते हैं, हम काम कर रहे हैं वहाँ, माल देना, पत्थर फेंकना, मिट्टी डालना, ऐसा कहते हैं नहीं हमें आप बताओ, बोले हमें थोड़ा सा बना के दिखाओ। सबने मना कर दिया, 100-150 लेबर थी, उनने सबने मना कर दिया। मेरी बहन कहने लगी, बोले भूरी आपको तो आता है, अब अपने घर की दीवारों पे बनाती हो, आप उनको बना के दिखाओ। मैंने कहा मैं अपने घर की दीवारों पे बनाती हूँ और मिट्टी का कलर लेके, और ख़राब हो जाता है तो फिर लिपापोती कर लेते हैं, और इनको मैं कैसे ख़राब हो जाएंगे तो क्या करके दूँगी, कैसे सुधार के दूँ। बोले नहीं आप ख़राब हो जाए कैसा भी बने, आप तो बना के दिखा। तो मैंने कहा मेरे को तो मैं बना के दूँ तो मेरे को मजदूरी कौन देंगे, मैं तो मजदूरी करने आई। तो मेरे को 6 रुपये मिल रहे थे। तो कहने लगे, बोले आपको 6 रुपये मिल रहे हैं, हम 10 रुपये देंगे। मैंने कहा मेरे को 10 रुपये नहीं चाहिए, मेरे को 6 रुपये चाहिए। मैंने उनको मना कर दिया, मेरे को 6 रुपये चाहिए। कहने लगे अच्छा ठीक है। मैंने पहले ही मतलब रंग कलर ब्रश से भारत भगवान थे बनाने के लिए मैंने स्टार्ट किया, और वहाँ से उनके स्वामी जी के कहने पर रंग कलर ब्रश से मैंने शुरुआत की। तो उन्होंने 5 दिन बनवाया मेरे को 5 दिन के 50 रुपये दिए। अरे वाह। और मैंने कहा ये इतने सारे पैसे क्यों दे दिए उनने, मैं मजदूरी कर रही तो मेरे को हफ्ते भर का 30 रुपये मिल रहे। मैंने कहा मेरा पति मेरे को डांटेंगे, मेरे को गाली बकेंगे कि काय के 50 रुपये मिले, डर भी लग रहा है। और फिर ऐसे करते करते फिर आया वो 1-2-2.5 साल के बाद फिर आया, कहने लगे भूरी भाई आपसे और बनवाना है। तो मैंने कहा हाँ बना देंगे। 10 दिन और बनवाया, 10 दिन के मेरे को 1500 रुपये दिए। मेरे को बहुत ढेर सारे पैसे लगे। फिर वो पैसे देख के ना मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले सब मेरे पति से कहने लगे, बोले तेरी बीवी को इतने सारे पैसे क्यों दे दिए, कौन ने दिए, ये किस काम के दिए। मेरे पति को भड़का दिया उन्होंने, ससुराल वालों ने भड़का दिया। मेरा पति कहने लगे, बोले आप मजदूरी करने जाओगे, ये ऐसा कलाकारी का काम करने नहीं जाओगे जी। अब फिर क्या करें, वो कहने लगे, बोले आपका घर दिखा दो, हम आपको ज़रूरत पड़ेंगे तो फिर हम बुलाएंगे आपको। मैंने कहा मेरा घर तो है ही नहीं, हम ऐसा घास का मतलब जैसे ओडा टाइप का वो झुग्गी बना के रह रहे थे भोपाल में। मजदूरी जहाँ मजदूरी मिली वहाँ मजदूरी कर ली। कहने लगे अच्छा ठीक है, जैसा भी घर है आपका घर दिखा दो। घर पे आए वो, बोले आप खाने में क्या लेते हो। तो मैंने कहा हम मक्के की रोटी खाते हैं। बोले हम भी खाएंगे, हमारे लिए बनाओ। तो मैंने मक्के की रोटी और चटनी, लहसुन वाली लाल मिर्ची की चटनी बनाई। उन 2-4 लोगों और साथ में आए, उन्होंने सबने खाया जी, उनको बहुत अच्छा लगा। ऐसा करते करते फिर कुछ सालों के बाद मेरे पति ने मेरे को ये, आप यहाँ आ गए, आप बोलने से डर रहे थे और आप इस मंच पे अपनी पूरी कहानी सुना रहे हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग और प्रेरणादायक आपकी कहानी है। मैं फिर आती हूँ आपके पास, पर इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बाकी गेस्ट हैं वो भी जुड़े हमारे साथ। भूरी बाई, श्रीमती सुरेंद्री देवी राणा से हम बात करते हैं। आपने हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में काम किया है और 35 विमेन वेलफेयर ग्रुप्स के साथ आप जुड़ी हुई हैं। आपने क्यों इसको चुना और किस तरह का संघर्ष आपने देखा और किस तरह का बदलाव आपको लगता है आप लेके आई हैं अपने परिवार में और अपने समाज में अपने काम के थ्रू? जी मैम, मैं बहुत गरीब परिवार से थी और एक हमारी जो दीदी आई थी हमारे गांव में, उन्होंने कहा कि बहन एक समूह बनाओ आप। तो मैंने कहा समूह क्या चीज़ होती है, मैं समूह को तो पहचानती नहीं, समूह होती क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक बार जुड़ो, आप 10 महिलाओं को इकट्ठा करो और उसको एक ग्रुप बना के और बैंक में जाके खाता खुलवाएंगे और आप हर महीने में 20 रुपये जमा करना। तो मैंने 10 महिलाओं को बुला के और हमने मीटिंग करके मैंने समूह बनवाया। समूह बनवाने के बाद जैसे कि हमने 20 रुपये महीना जमा करते थे, उस टाइम ऐसी हालत थी मेरी कि महीना आ जाता था लेकिन मेरे पास 20 रुपये भी नहीं होते थे। फिर ऐसे ही हमें 50,000 का हमें लोन मिला, उससे मैंने एक भैंस ली
और क्या कहते हैं, हमारी जो 7 जो महिलाएं थी उन्होंने भी एक भैंस ली। उस टाइम में 5 से 6 हज़ार तक की भैंस थी। तब हमने और अपने जो समूह था, समूह का नाम रखा था महिला कल्याण स्वयं सहायता समूह, ताकि महिलाओं का कल्याण हो। उसके बाद हमने जैसे हमने भैंस ली, उसका दूध बेचा और थोड़े थोड़े पैसे हमारे आते गए। और जैसे कि हमारे और भी गांव की महिलाएं वो भी कहने लगी कि जैसे ही आप अपना समूह चला रही वैसे ही हमारा भी समूह बनवाओ। तो ऐसे करते करते मैंने 35 समूह बनाए और उनकी मैं अध्यक्ष हूँ मैं। और आज मैं हर महीने में 110 रुपये महीना जमा करती हूँ। और 2010 में एक टेलर मास्टर आए, उन्होंने ट्रेनिंग दी मेरे को। जो घास की जो डलियाँ, छोटी छोटी डलियाँ कलरफुल वो बनाते हैं, उसकी मुझे ट्रेनिंग दी 3 महीने की। मैंने उस ट्रेनिंग में 3 महीने की ट्रेनिंग ली। उसके बाद में मास्टर टेलर खुद ही बन गई मैं, और गाँव-गाँव में वो ट्रेनिंग देती गई। जिन जिनको मैंने सिखाया उनमें से 1000 महिलाएं जो मेरे साथ अभी काम कर रही हैं, और वो उनको सिखाया वो खुद ही मास्टर टेलर बन गई हैं। और आज के दिन जो मेरी साथ जो काम कर रही हैं वो इतना खुश हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही हैं। और मैं क्या कहते हैं, उनसे बार बार यही कहती हूँ कि आप पे काम कर रही हैं, आपकी जो बेटी हैं, बहुआएँ, उनको भी यही काम सिखाना और ये काम छोड़ना ही नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ, जैसे ही मैंने इतना संघर्ष किया, जैसे मैं गांव से बाहर जाती थी, लोग कुछ भी बोलते थे, लेकिन उस चीज़ों को मैं ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे सास ससुर जितने भी थे, मेरा काफ़ी सपोर्ट दिया और अभी तक सपोर्ट ही किया और आज तक सपोर्ट देते ही हैं। और आज भी मेरे एक बेटा आया छोटा और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में आए हुए हैं। किसी भी टाइम कहीं से भी अगर लेटर आया, हर विभाग से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हर विभाग में मुझे हैंडीक्राफ्ट का जो जैसे कि स्टॉल मेला जगह जगह लगते हैं, वहाँ पर मुझे बुलाते हैं, वहाँ पर मैं जाती हूँ। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। सब लोगों से, देश विदेशों से भी लोग आते हैं, उनसे मिलके और बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगता है, मिलके अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो गांव में काफ़ी लोग बहुत खुश होते हैं मुझे देख के। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, बहुत ही प्रेरणादायक है। आपने अपने साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को और सशक्त किया है। हम अचम्मा जी से भी बात करना चाहते हैं। हिंदी नहीं बोलती हैं आप, मैंने सुना, पर आप गाती हैं बहुत अच्छा, आप ट्रेडिशनल फोक सिंगर हैं। तो आप और म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती, वो आप किसी भी भाषा में गाएं, उसका जो भाव है वो लोगों तक पहुंच जाता है। तो व्हाई डोंट यू सिंग समथिंग फॉर अस? तेलुगु जी जी बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में 300 భజన కేంద్ర रहने हैं। గ్రామాల్లో గ్రామానికి వెళ్ళి సత్సంగ కేంద్రాలు, అలాగే గ్రామ సమితి ద్వారా మహిళా కార్యక్రమం, మహిళల్లో ఏకత్రితం అవ్వడం, సంఘటితం, ఏదైనా సమస్య ఉంటే గ్రామ సమితి ద్వారా ఆ సమస్య తీర్చడం, ఇలాగా వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం ద్వారా ఇది జరుగుతుంది. అలాగే మొన్న కరోనా సమయంలో చాలా సుదూర గ్రామాలకు వెళ్ళి వాళ్ళకి మెడికల్ కిట్టు, నిత్యావసర వస్తువులు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం కార్యం కోసం 70 కిలోమీటర్లు దూరం నడిచి వెళ్ళి ఆ గ్రామంలో వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం ద్వారా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో మహిళల్లో చైతన్యం వచ్చింది. ఆ గ్రామంలో ఎటువంటి సమస్య వచ్చినప్పటికీ ఆ సమస్య మహిళలే తీర్చుకునే పరిస్థితి కళ్యాణాశ్రమం ద్వారా జరుగుతుంది. అలాగే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ఎక్కువగా మత మార్పిడి కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతుంది. వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం భజన కేంద్రాలు ఉన్న చోట అటువంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఎదిరించి వాళ్ళని పంపించే ధైర్యం మహిళలకి అక్కడ రావడం జరిగిందనమాట. I wish I could speak and understand Telugu. I'm sure you have a very inspiring, आपका मैसेज बहुत इंस्पायरिंग है. आप कुछ गाना चाहती हैं हमारे लिए? Do you want to sing? తెలుగు గానా, హిందీ గానా? जी तेलुगु गाना, हिंदी गाना, जो आप गाना चाहती हैं. శ్రీరామచంద్ర నిన్ను పిలచితిరా, ఓ సీతమ్మ నాథ నిన్ను పిలచితిరా, మెరుపల్లె మెరిసావు ఆ మిథిలలో,
మెల్లంగ విరిచావు శివవిల్లును శివవిల్లును విరిచి సీతమ్మను వలసి అయోధ్యకయ్యావు మహారాజువు రామ్ రామ్ సీతారాం 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 రామ్ రామ్ సీతారాం 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 రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ये दसरा नवरात्रि उत्सव में ये गाते हैं बड़ा गांवों का महिला सम्मेलन होगा करने हैं। गांव का महिला सम्मेलन 2000-3000 लोगों को महिलाओं का सम्मेलन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत। बहुत कम समय हमारे पास, इट डज़ नॉट डू जस्टिस टू योर स्टोरीज़। आपकी कहानियाँ बहुत प्रेरित कर सकती हैं बहुत लोगों को, पर इस मंच का जो ध्येय है वो ये है कि हम एक आइडिया दें लोगों को, एक बात शुरू करने का पॉइंट दें और फिर उससे लोग सीखें। तो थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी कहानी, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, हमें बताया किस तरह का संघर्ष आपने देखा है और क्या आपने अचीव किया है। प्लीज़ put your hands together for our panelists. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen, and thank you so much, Palki. May I now request you to please present the ladies with a memento. जोरदार तालियों के साथ श्री शक्तियों के इस जज्बे को सलाम कीजिए, क्योंकि शी जब शक्ति बन जाती है तो वो लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए सबसे बड़ी मिसाल कायम कर जाती हैं। The Vanvasi Shaktis, ladies and gentlemen, round of applause for these ladies. Thank you so much. Esteemed guests, we are now moving on to the next session, Raksha Shakti. This is to celebrate the indomitable spirit of our warrior women, the true epitome of Raksha Shakti. These women have transformed challenges into triumphs, shattered barriers and risen through the ranks in the armed forces, proving that they are forces to be reckoned with. Their mental fortitude and unwavering dedication have paved the way for gender equality in the military. खाकी वर्दी से लेकर मिलिट्री ग्रीन तक की वर्दी तक, एयरफोर्स पायलट से लेकर नेवी कमांडर तक, शीश शक्ति की बाहुबली कमान ने हर मोर्चे पर न सिर्फ दस्तक दी बल्कि जीत का परचम भी बखूबी लहराया और दुनिया भर में भारत का सिर गर्व से इस कदर ऊंचा किया जिन्हें कुछ शब्दों में बयां करना यकीनन मुमकिन नहीं। मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारी सहयोगी शिरीन भान को। दृढ़ता की मिसाल बन चुकी श्री शक्तियों के खास पैनल से भी हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे पुनीता अरोड़ा, जो कि इंडियन आर्मी में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुकी हैं और इंडियन नेवी में वाइस एडमिरल भी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा मंच पर स्वागत करेंगे दृढ़ता की एक और मिसाल सोनल वी मिश्रा का भी, जो कि IG CRPF हैं। आपका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। और साथ ही स्वागत कर्नल सोफिया कुरैशी का भी, जिन्होंने देश का सीना रक्षा शक्ति के क्षेत्र में गर्व से चौड़ा किया है। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी का भी हम मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हर मोर्चे पर आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, सिर ऊंचा किया। और साथ ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर सीमा राव का भी, जो कि आर्मी में एक कॉम्बैट ट्रेनर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रक्षा शक्ति के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए।
Well, good evening, ladies and gentlemen. It's great to be back, specifically on this panel, because here's a personal story. I am the daughter of a fighter pilot in the Indian Air Force, and so it gives me a lot of pride, and it is my privilege here to speak with these ladies here, these officers here, who've really been the torch bearers for gender equity and gender balance and gender parity as far as our forces are concerned. And let me just set the context here for where things currently stand now. We have women officers across the three forces. In fact, if you take a look at the Army, in the officers category, excluding the Medical Corps and the Dental Corps, the percentage of women officers in the Indian Army today stands at just under 4%. If you look at the Medical Corps and the Dental Corps, it's about a much significantly higher number. If you look at the Navy, the number of women in the Navy currently at about 6%. If you look at the Air Force, excluding the Medical and the Dental Corps, it's almost 14%. So we've seen a significant move up as far as the women's representation in the forces are concerned. If I were to take you through the many achievements and the many medals that each one of these women have won, it's going to be the end of this program. So I'm not going to go down that road. But let me start by asking you, Vice Admiral Punita Arora, I don't know how many of you realize this. She has served in each of the three forces. So that is truly remarkable. And she is one of the originals because she was commissioned in 1968. So what a pleasure and an honor it is to have you here. I want to understand from you, what have you seen as the big change and the big evolution from the time that you joined the forces and as you look at where the forces are today? Hello? Yes, it's working. Go ahead. Thank you so much. Now, I joined Armed Forces in 1968, as she has already mentioned. And we were the first one to be commissioned as a permanent commission. Earlier, they were only short service, means the woman joined, stayed there for 2 years, 3 years, and then, of course, they left and they back. So the forces, the organization was not used to having a lady officer as a permanent commission in them. So they never realized they are going to be there permanent with us only. So the challenges, my whole life was full of challenge only. And the main challenges came from three quarters. The first one was my colleagues, my own age group and the junior ones. The second challenge came from my seniors in my own unit. And the third challenge was from the organization itself. The challenges were because these people in armed forces was mainly a male-centric organization. They had seen ladies in their house as a housewife, their mother, but they never saw ladies who are going to sit next to them in the office and over there. So that was the main challenge. The juniors officers or my colleagues thought, my God, the lady officer, she's not going to work. Probably she will say, I want to take a leave, I have children at home, and she's going to give all kind of excuses so that she can take leave. My seniors also probably were not used to it because they never seen a lady officer coming and working with them. And my organization, because there were no rules and regulations meant for the lady officer. Everything was for gentlemen officers. So as a result, at every level, whenever I got posted, first of all, I had to convince everyone, look, I'm also going to work. I'll work with you people, and literally I'm telling you, I had to work double to convince them that a lady officers can also perform and perform well. So it used to take me 1 to 2 years. By the time I finished 3 years, well, I was posted out. And I was at the square one again trying to convince my whole unit that yes, we can also work. Now came from the organization. See, I will not say it was unfortunate. Well, the circumstances were such that there were no rules and regulations. Now, I'll give you a very small example. See, like I asked for my posting to Srinagar where my husband was there. Now, everybody was confused. My God, Srinagar, going to be posted with your husband. The ladies just accompany them. They don't get posted there. Secondly, asking for a maternity leave. So when I asked for a maternity leave, when my son was to be born, so the whole organization went through all the rules and regulations.
there is an annual leave, there is a casual leave, there is a sick leave. There's no maternity leave. There's nothing known as, because gentlemen officers don't have children. So that was the challenge which we faced, and let me tell you very honestly, these challenges throughout I faced. But one thing was there, I will fully agree that they were scared. Not scared, they didn't know how to react to the lady officers in there. But at the end of the tenure, when I used to leave, they used to say, no, please send us more lady officers. We are very happy with this. So these were the challenges which we faced when I was there, when I joined over there. In fact, all these young ladies who are sitting over here, they were not even born when I joined them. So in many ways, absolutely, you paved the way for each one of them to live their dreams. And I only say one thing, when people ask me, for the young ladies, what? I say, see, when you are going to be the first one in that field, everything depends on you, how you perform. If you perform well, you will open the floodgates for other young ladies to join that organization. Absolutely. But if you fail, and then you have got nothing to, give way to these others. I don't take pride or I don't say anything, but let me tell you that at my level, and all my other lady officers who were there, I give credit to all of them. They have paved the doors opened for the other officers, lady officers, to come into the armed Absolutely. forces. Ladies and gentlemen, a big round of applause. As I said, the original paving the way and opening the doors for so many of these officers that we see here today. Sonal Mishra, let me come to you. And very quickly, I want to tell you a little bit about Sonal. She's a 2000 batch Tamil Nadu cadre officer. She's the first woman IPS officer from Chhattisgarh to receive the much coveted Indian Police Medal Award in 2016. What an absolute pleasure it is to have you here, Sonal, with us. But, just to take off from what we heard there from Ms. Arora, what has the journey been like for you? Is it better today? Is it more accepting? Is the force more accepting? Are your colleagues more accepting seeing a woman in charge in uniform? I must say yes. I must say yes. The atmosphere, I don't know what ma'am would have faced, but definitely we have faced better times. And times are improving very fast. Because it's the critical number, Once the numbers start increasing for the women, I think everybody sees a role model, more so among women, among girls. We look at our role models. And the same happens with us in service when we look at our seniors and see that, yes, if she has done this assignment, why not I? So that role model thing helps us a lot. And the second thing is, the right attitude. I think that is the most important thing. If we have the right and the firm attitude, everybody down falls in line. But what has been the hardest part for you so far, and what has been the big change that you've noticed in the way that people approach you, and what is it that you would like to tell women who are watching you? Because as you said, today your representation of what the forces can do and what the forces offer for women, what would you say to them? I would say don't hold yourself back. If we are holding ourselves back, that is our problem. The force is there, the force or our organization is there, it's accepting us with open arms, I must say. And women at the right decision-making level can be the catalyst for you. And they are there now almost in all organizations at the right decision-making level. So don't hold yourself back. That's my message to the young generation. Whoever is entering at whatever level, I see in CRPF, I have served in the northeastern sector. It's a difficult area. One must not hold. We have had a lot of women who are serving right now in Srinagar, right now in the LWE-infested Chhattisgarh, from where I come from. And I must say that they are doing a wonderful job. And the women who are holding themselves back, please don't do that. It's on you. Don't hold yourself back. And let me take that point across to Colonel Sophia Qureshi as well. And like we just heard there from Sonal Mishra,
Colonel Qureshi has also served in the Northeast. She served in Punjab. She's also been part of the UN mission, the UN peacekeeping force as well, and played a crucial role there. Colonel Qureshi, as you look at your journey, at your own journey, what have been the big lessons and the learnings for you? And what is it, like we heard here from Sonal, that you would like to leave to the women who are watching, to parents who are watching, to brothers and fathers who are watching, because that's an important message to send out? Jai Hind everyone. Firstly, I would like to convey sincere thanks to everyone for giving this opportunity to speak at Nari Shakti. If you ask me, I belong to a warrior family, so it was in my genes, and I wanted to don the uniform. And believe me, Indian Army is the best organization one can have. It gives you an opportunity to surmount any kind of difficulties, and I'm lucky and privileged to serve the nation with honor and pride. Today, when I joined the army as a lieutenant, I remember I was a part of the division during the Oprakram. So what my company commander told me, Sophia, if you want to earn the salute, then you have to work sincerely. Believe me, I have earned the salute and also earned the commendation card during the Oprakram. It was all because of the good mentoring I had that time. And if you ask the challenges, I would like to highlight one incident when I was in Congo. And since you all know, the Indian Army is the largest troop contributing country in the United Nations. And I was the second batch of women officer, and I had a privilege to be part of one of the operation, which we conducted during the historical presidential elections. So I was a part of the one cordon and search team. It was a melange of force from the Swedish Army, from Tunisia, from Uruguay, and we led that cordon and search operation. We did it whole night. It took 72 hours, but it was successful. We could save the life of local populations. And next day, the force commander asked me who was that lady from the Indian Army. I think that gives me the pleasure. The people talk about the Indian Army, not Colonel Sophia Qureshi. So such incidents happened in my life, and I had a privilege to command the contingent at ASEAN nations. I was the only woman officer among 22 nations. So I'm also thankful to my organization for giving me this opportunity. I was lucky that I was with the Sonal ma'am in Northeast, where I was again privileged to mentor the first batch of women military police soldiers. And there we worked together in many of the operations and work. And lastly, you all know that I'm a full colonel today, and I'm commanding the unit. Yeah. I'm from the first batch of women officer. So salute to my organization that I've got a chance to command. Well, a salute to each so much. one of you. A salute to each one of you. As you said, it's your pleasure and your privilege to work for the organization, and it is our pride to have you here this evening and share your stories with us. Squadron Leader Sindhu Reddy. Ladies and gentlemen, I don't know if you were watching the Bastille Day parade on your TV screens. Many people were, but if you were, then you watched Squadron Leader Sindhu Reddy leading the Indian contingent, taking center stage there, leading a team of 60 plus officers. What was that feeling like for you? And also, Squadron Leader Reddy, you know, you've now been part of the Indian Air Force for over a decade now, little over a decade now. What's this journey been like for you? So, giving the salute to the Prime Minister on the Champs-Élysées and on the French National Day especially tops my list of achievements as of now, definitely. You know, carrying the might of the entire force that was behind me and being there, leading my contingent, it gave me all that power, it gave me all that strength that I can do it. If somebody else can do it, then definitely I can do it as well. I have everything in me. So what was going on in your head the previous night, just before you actually had to lead the contingent? You know, was there an internal dialogue in trying to deal with the pressure and the nerves? I'm sure that's part of it. Oh yes, definitely. I almost had a nervous breakdown thinking that, you know, I actually didn't realize I was going to be the first woman marching on the foreign land. Until, you know, that moment when I realized, I almost had a nervous breakdown. I'm like, oh wow, this is news to me. But yes, of course, my training and the way we've been preparing for that parade for almost about a month or so, it put me in a place where, you know, come what may, I have done this before, so I can do it. So that is a confidence I could carry with myself, and as always, I had the support of my contingent. So when you have the support and when you have the might and you have your own strength, nothing is unbeatable. So that is the message that we wanted to deliver, and it was
delivered in the right sense. It was delivered across the country and across the world. People who were watching. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Squad Leader Reddy for leading the Indian contingent. But you know, that was on the ground. Yeah. What about up in the air when you're actually flying? What has that internal dialogue been, and what's the external dialogue also been? When you actually started to fly, what was the reaction and the response? So my dream has always been to fly, and when I was going to join the Air Force, I realized what better way to do it than to don the uniform, the pride, the respect, and fly for the nation. So that's how I entered the forces, and I chose to be a helicopter pilot because I wanted to be in close connect with all my troops and all humans on ground, because that is what helicopters finally do. You provide aid to the forward forces, you also provide aid to our civil countrymen whenever they need rescue. So that has been the highlight moment of my career. Every time I was able to help our troops with logistics support or any kind of support, and they send you back definitely with a box of fruits, if nothing, from the forward post as well. Coming back, landing in the base and looking at those boxes, it used to make me teary-eyed. When they had no resources, they had to thank you somehow because you provided something to them. So those moments are definitely something that I've lived for. And also when I could, in my own capacity, provide some rescue mission, some assistance to the rescue missions during the flood reliefs and all that. So people used to come literally thank you. I mean, that feels like a really important moment and the most, the highlight of my career, I would say. Absolutely. So, and fruits as a way of expressing gratitude. What can be better than that? But Dr. Seema Rao, let me come to you. Again, for those of you who may not be familiar with Dr. Rao's work, she's often called the Wonder Woman. She has many firsts to her credit. She is India's first female Special Forces trainer, having trained the Special Forces for over 2 decades, and she's an expert in close quarter combat. Dr. Rao, I want to understand from you, what made you want to do this, and what has the learning and the lesson been for you over the past 2 decades of doing this? Well, let me start by saying that destiny had something really different for me. I started as a doctor, but eventually destiny took me to training commandos of the Indian forces. It's been a 25-year-long journey, and a journey, I should say, of glory and strife. I've had to work hard on my physical prowess because, after all, standing in front of highly trained and skilled commandos is no joke. And but when I had to, teach them certain techniques, it was obviously a challenge to me. But I took it in my stride. Every day was a challenge, but I would hone up my skills and I would see that I would give my best. And at the end of the day, when I would get the respect of those male trainees, I train men. So, so when I would get the respect of the male trainees, I think the male commandos, it was very satisfying to me because for me, this was a selfless service to the country. And I was doing it because of probably the patriotic blood that ran through my veins. My dad was a freedom fighter. Nevertheless, I think it was a wonderful journey, and I will never forget, the respect that I earned, the satisfaction that I gained out of training them in close quarter battle. We're going to see Dr. Rao show us what she's actually been doing over the past 25 years. So you'll see that in action in just a second. But Vice Admiral Arora, I want to get wrap-up comments from each one of you. What is it that you would like to say to young women who are watching, as I said, to parents who are watching as well, and to the armed forces to ensure that we do have a much more gender-balanced organization going forward and people don't have to go through the challenges that you went through? Well, I would like to say one thing to all the young, women of our country and to the parents. Armed Forces is a wonderful organization. It gives so much of respect to the woman, and I think if you ask me, I always say, even if I have to repeat my life, I would still go and join the armed forces. But I've got only one advice, I will say advice or whatever it may take. It gives you so much of respect
and opportunities. At the same time, we should also remember, as a woman, that it's not only our privileges what we should be looking for, we should also remember our responsibilities. So responsibilities towards the organization. We have to change, not change, get used to that life. It's very difficult for the organization to change according to your vision. Absolutely. So we should all get married into the organization, enjoy this thing. They are there to look after you. So you don't have to regret at all. And so you I would do wish everybody all the best, all the young girls who want to join armed forces. I will say they'll take you with an open arms, look after you, but you have to remember your responsibility. Absolutely. That is Sonal, what to say. very, very quickly, the one thing that you would like to say to people, once you already said don't hold yourself back, what else? You'll have to use the mic. I'll say within the organization, we must have more women at the right levels to give the right perspective of a woman's need. And as an organization, maybe at every level, there has to be a little more understanding of the requirements. As ma'am said, there can be different requirements at different times for a woman, but she has to put in her best. And she has to put in her double. And in police, when we were young, we got that lesson saying that you don't have any opportunity to fail, you know. Yeah. We don't have that chance. You have to succeed every time. Yes. So I think it's both ways for an organization as well as for us. Absolutely. Organization to be a little more accommodative and understanding as to what she needs at what time, and she may need certain things in certain times. Right. Maybe maternity leave, as ma'am said. But then when she comes back, yes, you are full on and you have to give in your best. Absolutely. Thank you. Colonel Qureshi. Would you like to give me a message to the kids? Yes. I would like to give you a few rules for the kids, especially new generation baby boomers. Remember, whatever you do, nation should be first and selfless service. Secondly, be bold, brave and dynamic. Be disciplined, be courageous. Have your own legacy. Create your own destiny. Manage time. Every one of us 24 hours. It only makes a difference of 3 to 4 hours when you play mobile or do something else. So manage your time, which is very important. And lastly, remember, you have to think about the country first. Thank you, Jai Hind. Squad Leader Reddy, your message. So yeah, I'm very thankful for my organization in a way that Indian Air Force has opened its door for all streams for women. So that way, if any young woman, any young girl wants to join the forces, I will say opportunities are plenty. Like, don't think that there's no opportunity. Even if it is not there, it will be made. If you have the determination, if you have the grit, it will be made. So if you want it, just go for it. Don't hold yourself back. Well, don't hold yourself back. Dr. Rao, I'm not going to let you speak. I'm going to get you to do something for us. But ladies and gentlemen, a big round of applause and a big salute to each one of them for joining us here this evening. Thank you so very much for showing us what a life in the forces is and what the opportunities are for women who are looking at a career in the forces. Thank you very, very much. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Dr. Rao, I would request you to stay on because we're now going to see her in action. Absolutely. Thank you so much for that. Shireen, I'd also request you to felicitate all the ladies here on the stage. A huge round of applause for these super achievers, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here with us. And as Shireen has already teased for all of you, Dr. Rao has a special something
that's planned for everyone. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts because what you are about to see now is going to be very exciting stuff. Dr. Rao is coming out. She's just getting out of her panel clothes and getting into her combat gear. So she's going to be giving us a very brief demonstration of what close combat is really about. So you don't want to miss this. Please do take your seats while we get Dr. Rao back out and we clear the stage so that she can do what she does and what she's been doing for over 25 years, ladies and gentlemen. As we pointed out, she is the first woman who has trained the special forces, and she's going to be showing us what she does. Dr. Rao, if you're ready, we're ready for you. Yeah, sure. Come on. First and foremost, a very good evening to everybody. I read long back a quote which influenced my mind. The me I think is the me I'll be. I read one more quote which influenced my life. Life is tough, darling, and so are you. My journey in commando training was a very long journey, 25 years past. Then I realized that I wanted to empower women. So I devised a program called DARE, Defense to Assault, Rape and Eve Teasing. So I'm going to be talking about that. To start with, I'm going to read a few statistics which are very astonishing. The crimes against women, 50 per hour, 5 lakh per year. The rapes, 3 per hour, 30,000 per year. And kidnappings, 2 per hour, 1 lakh per year. Now this is extremely astonishing statistics, and that's why I came up with this program. Let me first try to make it very clear that there is a distinct difference between eve teasing, molesting, assault, and rape. Eve teasing and molesting requires a minimum response. The response should be a slap, maybe a threat. Assault and rape requires an aggressive response. And when I say aggressive, I mean that you need to hit the vital targets in a man's body. You need to be using anything and everything around you which you can take and whack him, hit him on his head, hit him on his joints. So there has to be a very aggressive response for rape as well as for assault, and a minimum response for eve teasing as well as molesting. I'm going to not take too much time talking. I'm going to go straight to a demonstration. Anand, can you come here? This is going to be an eve teasing response first. So here we go. I'm walking on the street. What you need to do here is, do not take your eyes away. Do not stare too long. Just give him a firm look and move away. The second thing, we go on to, what's the next one? Lewd gestures is the second thing. So I pass from here again. Oh, baby doll. Aha, Miss India figure hai. No! Wonderful. No, stop. And move past.
The third response is grabbing the wrist. बेबी आती क्या खंडाला, चल आना. No, पुलिस को बुलाऊंगी, बस. And you move away. Now we go on to the next response, that is to, can you tell me, Anand, what it is? To an assault. It's going to be a demonstration on vital strikes, the vital areas in the body. So the first is the eyes. Flick the eyes, hit hard. The second one being the nose. Hit the nose with the palm heel. Third one being the ears. Here. It can cause the eardrum to break. The next one is the throat. So I squeeze here the throat. In this case, one finger in the notch, the other one on the Adam's apple, and I squeeze hard. The next would be the groin. So for the groin, it could be a groin kick or simply a flick hard. I'm showing it on the thigh, it's actually done on the groin. And after that, you have the shin kick. So a front kick done to the shin. The shin is a bone here, very superficial. So I kick hard. And that's it. We go on next. Okay, so now these are techniques of, yeah. So go on. So the first one being a hair grab. बहुत शाना बन रही है तू, बहुत शाना बन रही है. चल दिखाता हूँ मैं तुझे. What's the next one? The next one is a choke done to your throat. गर्दन दबाऊंगा तेरा मैं, गर्दन दबाऊंगा. Stand up. The next one. This is a slap. चले, शाना बन रही है. So you keep slapping him to submission. Next one. Okay. The next thing that we're covering up is molestation. Here in this case, first thing, groping the breast, very common. 1 minute. Start. Beautiful, sexy. अभी मजा आएगा मुझे, मजा आएगा. You have to push the hand away and attack. Next one. Circular swoop. So I'm standing here. Oh, sexy, baby doll, चल ना मेरे साथ. Next one. Okay. This is when you're being bear hugged from behind. चलो डार्लिंग, चलो मेरे साथ. The hands are trapped. Stand. Okay. This way. I'm walking. Come on. डार्लिंग चल ना, पिक्चर देखेंगे साथ में. चलो डार्लिंग. Stand. I'm also going to be talking about how to respond to rape, but that will be after some time. We go on to a weapon. Now first, let me just give you a short talk on how to deal with a weapon. You have a weapon which is a blunt weapon or a sharp weapon. A blunt weapon can be a bait and stick. A sharp weapon can be a knife. The first thing that you need to understand is defensive or offensive. Defensive is you take anything that's close to you, a newspaper, maybe an empty bottle,
or maybe a bag that you have, and the attacking hand has to be hit. ये चाकू देख, घुसा दूंगा अंदर, देख इसको। So I've used the newspaper on his wrist. Next one. You have a bottle? Get fast. Now I'm going to be using an empty bottle. This is a stick. Okay. सर फोड़ दूंगा तेरा मैं, सर फोड़ दूंगा। So you have to hit the wrist so that he drops the weapon. Go on next. Now it is what to do when somebody is going to attack you with a knife. चाकू देख, अभी घुसाऊंगा, देख। Next. Straight from above. सर फोड़ दूंगा तेरा मैं, सर फोड़ दूंगा। Stand. Now let me talk about acid attacks. It's a very common situation these days. How do you deal with an acid attack? It's the rule of A, B, C, D, E. First, A stands for clearing of the airways. That is to see that the acid doesn't enter you through your nose or through your mouth into your respiratory tract. Second, B. Remember, as acids could be liquid, they could also be powders. So B stands for brush off the powder from your body. Third is C. C stands for whichever areas of your clothes have been drenched in the acid, take your clothes off. Next, D. D stands for dilution. The acid needs to be diluted with lots and lots and lots of water. And lastly, E stands for emergency, in the sense that you have to call for an ambulance and take the person to the hospital. So first, do it. So here he comes, I'm standing innocently. चेहरा बिगाड़ देगा तेरा मैं। So first and foremost, the nose, mouth, do not scrub, okay? After that, get water. I have nobody else but Anand to get the water for me right now. Okay. I brushed off, okay? Take the clothes off. Finally, you have water. Pour it, keep pouring. More water, more water, more water. Just keep pouring it on the area. And finally, the last thing would be to go to the hospital. Okay, next. Now I will be going on to the rape sequence, so I need to get this off me. चल चल मेरे साथ चल, अभी दिखाता हूँ।
बंद कर तेरा आवाज। Don't spare him. When you hit him really hard. You should never think of getting back at him. The last one is where again you're down and he's going to try to get in between your legs. चलो अभी दिक्कत हूँ मैं, हाँ? चारा बन रही है? Unconscious. Please, carry it down, please. With my thighs. That causes a person to go unconscious. I'm going to squeeze the carotid arteries here and get him off. Next. Okay. Now we're just going to, I think self-defense is very important for women. My daughter went to Germany for a fight in a cage against a female competitor. Unfortunately, a competitor did not come. What my daughter did, I told her simply, just select any male contestant over there and fight him. She did exactly that. And she's one of the very few women who's beaten up a man in a cage in Germany. So like I mentioned, fighting self-defense is important. I'm going to just show a small snippet of how to do it. Does it does? It's always good if you have protective gear, because otherwise you could end up injuring yourself a lot. That's an elbow break. But then it So lastly, let me just say one thing. It's important to know enough for the fight. You can take care of yourself. Also remember, to all the men here, never underestimate the power of a woman. To all the women here, together we stand strong. So be strong, do not feel victimized, and fight your best. Make the best of your life. You have one life. Do not get deterred by your gender. One last statement. Maya Angelou, an American civil activist, said once, I like to see a girl go out and hold the world by its lapels. Life is tough. You gotta kick ass. Dr. Rao, thank you so very much for demonstrating the power and the strength of a woman. I have to say I had mixed feelings watching you do that, because at many levels I was angry. I was feeling frustrated, angry about the fact that we still have to deal with this, that women cannot walk on the streets without having to feel like they have somebody trying to stalk them, or just a sense of insecurity and a lack of safety and feeling vulnerable constantly. I hope we create a world, I hope we create spaces, public spaces specifically, where women feel safe, where women can reclaim public spaces. I think that is also equally important. While self-defense is important, but all of us, civil society, the government, all stakeholders need to ensure that we create public spaces that are safe
safer for women. We need to make spaces where men feel safe. Ladies and gentlemen, Dr. Rao, thank you very, very much for joining us here this evening. It's been a pleasure. Thank you so much, Dr. Rao and Shireen Bhan. Thank you so much. और अब बारी है हमारे अगले सेशन की, जो कि है नीति शक्ति। शारीरिक शक्ति बाहरी तौर पर मजबूती दे सकती है, लेकिन आत्मशक्ति भी उतनी ही जरूरी है। आत्मशक्ति समाज और देश को न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक तौर पर भी ताकतवर बनाती है। ये बात उन बेमिसाल शी शक्तियों से बेहतर आखिर कौन जान सकता है, जो देश को बुलंदियों तक पहुंचाने में अपनी बेशकीमती भूमिका निभा रही हैं। करीब 15 लाख महिलाएं जमीनी स्तर से लेकर संसद तक राजनीति में सक्रिय हैं। ये वो सम्माननीय शी शक्ति हैं जिनकी आत्मशक्ति ने ज्ञान शक्ति की ऐसी ज्योत जलाई जिसे बुझाया नहीं जा सकता। And today we shine a spotlight on women who are shaping policy and governance. Women who have assumed pivotal roles in shaping India's future from the grassroots to the parliament. With immense pride, we present to you the brilliant minds behind the nation's economic, bureaucratic and academic landscape. But let me first request our colleague Chandra Shikrant to please come up on stage. Ladies and gentlemen, please welcome Shamika Ravi, a distinguished member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. Ms. Pranjal Patil, the first visually impaired IAS officer in the country. Remember, she is also the district magistrate in Shahadra, New Delhi. Babita, a Sarpanch from Jammu and Kashmir's Laddu. And the accomplished Sanyogita Singh Chauhan, who is also a Sarpanch from the Atari Gram Panchayat, and she is also an MBA, ladies and gentlemen. These remarkable stories we are hoping will be inspiring and illuminating the path forward. Over to you, Chandra. Thank you for that. What a day it's been, and you know, I hope the previous session, it gave me a lot to think about, and hopefully lessons in self-defense that I never have to use. But thank you all very much for joining us on this session on Niti Shakti, because it's vital that there are more women in policy-making roles at the grassroots level, at the upper echelons. You know, each of them has a very remarkable story as the anchors introduce them. I'm going to start with Pranjal Patil ji here, right here. She's an IAS officer, and you know what's remarkable is she's the country's first visually impaired IAS officer. She's currently the district magistrate for the Shahadra region in New Delhi. A huge round of applause for her. She's here, you know, by sheer grit and perseverance. She gave the UPSC exams twice, cleared it with a very good rank, and cleared it without any coaching at all. Pranjal, you know, share your experience with us. What motivated you to take up civil services? And, you know, how do you go about being a district magistrate? How did you go about being a sub-collector in your previous role at Thiruvananthapuram? Yeah, hi. Thank you so much for having me here. And I think all of us have some ideas in our childhood that, you know, what our interest areas are. And we may not know it very clearly. So I was always inclined towards something social, and you know, history was also my favorite subject. So I always wanted to do something, and I really didn't know how to go about it. So only when I went to college, I got to know that there are something called civil services, and I felt that, oh, it's something little closer to what I want to do. And obviously, it's not like when I got to know, right away I started doing it, because some basic academic has to be pursued. So I did my college. Then for higher studies, I came to Delhi, to JNU to study. And only after my master's and MPhil, I could get that courage and conviction and time and enough understanding of you know, the exam and the preparation. So I started preparing for it, and
though it was not very easy journey. I think no journey is easy, no matter what background we come from. No journey is easy, but you know, with enough with inner determination and external support, we all can do what we want. And I think yeah, all credit goes to like my own determination and the support I received from family, friends and teachers and everyone. Thank you. That's a very inspiring story. We also have two sarpanchs or pradhans in our midst. Babita ji, who is a sarpanch, a Kashmiri Pandit,